पीछे दोनों Good afternoon, everybody. It's the final league match, which is the de facto semi-final between ADCL Reds and Greens. ADCL Greens have won the toss. Haider Hussain, the captain, winning the toss and then deciding to bat first, which was the obvious choice. It's a flat deck. It's a new pitch today. Naveed Khan is leading the team today in absence of Zain Butt, who could not lead the team and join the match because of personal commitments. It's a hot day, it's a sunny day, slight. Naveed Khan to start the proceeding. LBW, first victim for Naveed Khan. Assalamualaikum. Umpire adjudging Saurabh Mehta as LB. Captain, don't say this. Just because the batsman said कि जी मैं इधर खड़ा होता does not mean he is not out. यहाँ बैठ जा, कुर्सी लगा के बैठ जा। कौन गया? दाऊद सर लेट जा ना, बॉल के बाद बैठ लगा के लेट जा, फिर बाइस के फिर तो ओ भाई गया कौन है? Zishan Daud. Zishan Daud to now face Naveed Khan. Zishan is a talented batsman but has been out of form. Hopefully he'll score a big one today. Driven towards point, protection there. Very lucky to survive that ball. Zishan Daud, however, a single taken.
Partnership is what is required. Babar Amanat now facing Naveed Khan. Played and a miss. Jinnah. A good over for ADCL Reds. The captain leading from the front. It's 2 for 1. Saurabh Midha back to the pavilion. Numan Hamid to start the proceeding from the parking end. The first over has been taken from the golf course end, which means the 8th over will be taken from the parking end. The last 9 overs shall be played from bowler's perspective, shall be bowled from the golf course end. Numan Hamid now charging in. Babar Amanat facing. The wind is towards the mid-wicket region, blowing across, so that's the business area for Babar. Cautious approach by Babar. Another dot ball. Numan doesn't seem to be 100% fit, and this is something which Babar can take advantage of. However, definitely since an early wicket has been taken by Reds, Babar would like to settle first. Lots of over left. Babar is very strong in the mid-wicket region. Now there is a protection taken. The two fielders outside, Samad Khan in the mid-wicket region and Humayun at the cow corner. Another dot ball. फारूक किधर है? फारूक का तो शिफ्ट हो रहा है फिर अपोजिट क्या सीन है? यहाँ भी चल रहा है.
Last ball of the over, played cautiously. Sorry, one more to go. Apologies. Nishan playing cautiously. Smack towards the point region. Ball running away. And a 4. Excellent shot. Hello. 4 dot balls so far. I think height was the issue here. Slightly uppish. बहुत डिफेंसिव हो गया वो. ये इसका खेलेगा तो सीधी ये बोल रहा है. बहुत हुआ है. बहुत बड़ा रन है यार. अपने से प्रेशर था ना. ये आई थिंक हाइट की वजह से बच्चे अगर नीचे होती तो आउट. बहुत डिफेंसिव होने का. शाबानीडो.
चलो शाबाश 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 गाइस रोटेट करके रखो That is 7 for 1. Hello. 7 for 1 in 3 overs. 7 for 1. Made an over by Naveed previously. Numan Hamid to continue. कमरान भाई किधर चले हो? ले उधर गेट रेडी यार कहना चाहिए a good shot by Zishan नदीम भाई भेजा है उसे गेट रेड चाहिए ना मैं तो भेज दी है single taken Babar now wide delivery slightly windy today definitely the ball should swing शाबाश शाबाश दिल रखिए फिर बॉल and that's a huge six towards the cow corner region by Babar. That's the region Babar is very strong at. He's very weak in the off region and very strong in the on region. And definitely this was a loose delivery. गर्मी लग रही है आज हाँ ये ऐसे नाल तो नहीं चलता ना काम चल महंगा नहीं मिलता जो बेचारी थी ब्रॉडकास्ट खराब कर दी pressure seems to be on Numan as of now that's a catch and he's gone careless shot by Babar this is what was not required by him already 9 runs had come off this over careless shot played by the batsman and he's now walking back to the pavilion. A good catch by Naveed Khan. There was a chance of collision. However, Jawad Kazi walks in. नौ आ गया ओवर का यार नौ आ गए क्या जरूरत है मारने की यार अभी भी मैंने तुम्हें सुबह समझाया था कि तुमने लास्ट मैच में यही किया 16 आ गए थे फिर विकेट को That's a welcome wicket
for ADCL Reds. Babar was beginning to flex his muscles, but this is what cricket is all about. You play one loose shot and you are back to the pavilion watching the game. Jawad Qazi walks in. However, Zishan Daud will be facing. 2 deliveries left. Numan Hamid coming from round the wicket. Interesting ploy. It's 16 for 2 in 3.4 overs. Good shot. However, there is protection there. Actually, I think Zishan is following a wise strategy today. He should stick around. He has a habit that he can snatch big overs from the opponents. He should wait for those overs, target a long innings. Played and a miss, and it's a wide delivery. 10 runs already received by ADCL Greens in this over. 1 ball left. The batsman should play cautiously. No need to play any adventurous shot. Very intelligently played, and that's the end of the 4th over. It's 17 for 2. This was a 10 runs over. Zishan Daud is on 6 runs from 8 deliveries. Jawad Qazi has yet to face a single delivery. Numan Hamid finishes his second over. He's 2 overs, 15 runs conceded, and 1 wicket taken. Good over here. मैंने कहा दोबारा राउंड विकेट आऊंगा, ये मुझे फिर ताड़ेगा कि लेग पे शॉट मारूंगा। बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। आ गया जेडी को। शाबानीडो, शाबानीडो। ए विकेट है। किसी भी जगह पे जाके आउट हो जाएगा। Jawad Qazi now facing Naveed Khan, who's coming round the wicket. Jawad Qazi today is the key batsman. He has a big appetite for scoring big. Master of partnerships. Very agile and fit. Excellent runner between the wickets, and definitely Greens would be hoping that there would be a partnership now in between these two batsmen. Naveed Khan bowling the 5th over, leading from the front as the captain today. And gone. Clean him up. My goodness, what a peach of a delivery. Clean bowled. अगर आप जा रहे हो सारे एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, सारे एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। बैट्समैन का नाम ले लो, कोई बैट्समैन ही नहीं है। चुप कर जाओ यार, समीर असली बोला करो। चल रहे जबरदस्ती बोला। पागल है तू, तुझे अभी तक सबक नहीं सीखा तूने? बड़ी जो वीडियो लगा रहा था मैं कल ही यार है वीडियो लगाता हुआ। What a ball, what a delivery, and what a wicket. Jawad Qazi's wicket of first ball is definitely a gold nugget for any team. Haider Hussain now facing. The captain comes in the middle of the pitch. Definitely ADCL Greens are in crisis mode as of now. They won the toss and they decided to bat first. However, they are 17 for 3 in 4.1 overs. Nomi, that's a wide delivery. Naveed Khan has his tail up.
The captain today leading from the front. 2.1 overs, 3 runs conceded and 2 wickets taken. Definitely hot in form, very focused and very pacey as well. A dot ball. Swing हो रहे swing हो रहा है बॉल तुझे और कैसे ड्यूक चाहिए मेरा मैं इतना बड़ा बॉलर नहीं हूँ ना देखिए इस रन अप से swing हो रही है और आज आप विंड भी चल रही है विंड है तो फिर तो यार ड्यूक को भी करना इतना आसान क्या तक लिया It's gone. What a catch! बैट करो टकंडे हो इधर पारियां तको बहुत आला लीडो बहुत आला हैदर भाई ने पहले ही बोल दिया था कुलदीप को बैट कर कुलदीप रेडी नहीं है तू बैट्समैन आ रहा है बैट्समैन वापस आ रहा है बैट्समैन आ रहा है अगला बैट्समैन एक आ गया अगला भेजो यार सारे तैयार हो जाओ क्या मसला है सबकी बारी आएगी 4 आउट हो गए हैदर भाई ने तुझे बोला था कुलदीप तू रेडी नहीं है What a catch! What a ball! Shakil, you beauty! ये बात है A man who is always in action, whether it is bowling or batting or fielding. But what a catch! Magnificent. Green's top order in tatters. It's 18 for 4 मैं क्या भी सीन in 4.3 overs. कोई नहीं है देखो टीम में क्या सुने पड़नी है बातें सुनो टीम की सारे कर लो अपने सारे कर लो 12th मैन की कोई नहीं सुनता यार कुलदीप तुझे कैप्टन ने पहले कहा था बैट कर अभी तक नहीं किया तूने कैप्टन की Naveed Khan, magnificent 2.3 overs, 1 maiden, 3 runs conceded and already 3 wickets taken. One of the best bowling spells by him of the season under progress. बहुत आला लीडो भाई वेल बॉल जाएगा शाबाश वेल बॉल लीडो इंडिया लिमिट यार मैं आपसे डगआउट में हूं भाई आपसे बात नहीं कर रहा आप फिर अपने डगआउट पे चुप करके बैठो बस मैं जो मर्जी करूं रिलैक्स यार क्या हो गया होता है सनी पागल हो गया तेरा प्लेयर है पहले ही है Cautiously played towards gully. हैदर भाई छोड़ो नहीं Either ball swing हो रहा है? सही बॉल स्विंग हो रही है मैं इसलिए देखे तो ध्यान नहीं हो रहा है नीडो का आउटस्विंग अच्छा हो रहा है आउटस्विंग अच्छा हो रहा है एक्चुअली आज हवा भी तो चल रही है ना वही उसको वही एडवांटेज है लेग से वही कर रहा हूं That's the end of a magnificent over. The 1 run. मैंने रंगा हो उसके बाद हमें पता सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग जब आप फुटवर्क नहीं करेंगे और ऐसे नीडो की बॉल रोकने की कोशिश करेंगे या नीडो अगर नीडो के पास प्रॉपर ट्रेनिंग और पावर होता है ना ये PSL लेवल प्लेयर है बिल्कुल इसकी हमने क्लास मलेशिया में देख ली हुई है ऐसे प्लेयर्स के सामने आप यू हैव टू बी ऑन योर बेस्ट यार अब थोड़ा सा स्कोर दे दो यार वो कहता है मैं लेग का गार्ड ले रहा हूँ ठीक है लेकिन यार वो करता भी तो कुत्ते वाली आउट स्विंग है ना आप लेग का गार्ड लें और आपको पड़ जाए यहाँ पे तो बॉल तो अंदर ही जा रही है Numan Hamid now continuing 18 for 4 in 5 overs. Definitely Reds would love to press home this advantage and restrict Greens as low as possible. Greens would like to
pass this killer spell without losing any further wickets. Cautiously being played by Zishan. He has been the mature batsman so far. He knows that there is a Herculean task in front of him now. There has to be a partnership. Anything, 30, 40, 50 runs partnership has to be there. Very well played towards long off, and that's a 4. Very intelligently played. Correction, that's long on. आज कौन आप थे ना, मैं इसको यही कह रहा था कि पहले ग्राउंड शॉट कर. दिस इज द वे. पार्टनरशिप छोटी छोटी 30-30 रन की, 20-20 रन. ये वो दिया उसने अरुण भाई. तो एरियल शॉट कुलदीप, तू लास्ट टाइम भी याद है इधर आई थी, तूने शॉट अच्छी मारी थी, लेकिन इधर अगेंस्ट द विंड मारना बड़ा अजाब है. मारनी है तो फिर उधर मारो. अगर मार हवा तेज है यहाँ पे, अगर आ रही है तो ऊपर ज़्यादा तेज होगी. और भाई a good shot driven towards long off. However, there's protection there. So 5 runs taken from 3 deliveries. Ishan Daud trying to build a partnership here and doing quite well so far. He's on 11 from 11 deliveries. Riaz Afridi is a hard-hitting batsman, and I believe that he has to definitely control his urge to go for it. The bowler would love for him to have a go at the mid-wicket or cow corner region. That's where the fielders are placed outside the circle. Cautiously played, dot delivery. Chance of a catch, but Nadeem was inside the circle. It was always difficult for him to go back and have a try. 1 run taken. That was a risky shot. Riaz is quite lucky to get away with it. Very cautiously and well played by Zishan. However, the non-striker batsman Riaz was not ready for a single. That's the end of the over. 6 runs coming off this over. At the end of 6th over, it's 24 for 4. So definitely consolidation period going on. Zishan playing quite maturely. By the way, Riaz ने जो shot खेली ना, that was a stupid shot. हाँ, वो बल्कि अच्छा खेल रहा है दिशान. आज आप नोट करना, दिशान जो है ना बॉल पे चढ़ के खेल रहा है. पहले जो ये कैच पकड़ा रहा था ना, ये नीचे से ऊपर आ रहा था. अब ये अगर ये रियाज का कैच होता ना, मैं आपको कहता हूँ आप 100 नहीं टप सकते. अब हम दिख रहा बनिया हाँ ना, पहले इसने अच्छी पंच की है. मैं क्या शायद करती है. आगे बॉल मिल गई बस उसको मार. मैं कहता हूँ यार, अगर मारनी है ना तो फिर पूरी मारो. हवा का हवा एज होगी तो ठीक है. नीडो का मैं यही डबल पहले मैं जा रहा कट मारने मैंने हाँ चेक करके मैंने सिंगल के लिए मुझे ध्यान नहीं दिया और गया भी बिल्कुल हाथों में. उसने कैच भी अच्छा किया यार. कामरान बट नाउ इन अटैक. रियाज अफरीदी, कामरान बट, डॉट बॉल. And that's gone. Clean bowled. Riaz Afridi. Emotions getting the best of him. That was a careless shot played by Riaz Afridi. Najam now walks in. The top order now decimated by ADCL Reds. It's 24 for 5 in
6.2 overs, greens, looking down the barrel, looking possibly towards the lowest total in Clash's history in the last 7 years. But I must point out here that nearly all the wickets are the victim of, definitely I'm not taking anything away from the bowling, but definitely poor selection of shots. Especially at this stage, you do not require to play such adventurous shots. And that too against the wind, because the wind is blowing across, it's going diagonally towards the, as of now, if you're bowling from the golf course end, the wind is blowing from the cow corner region towards the diagonal gully point region. So even if you want to play, you have to play against the wind aerially. Najam Saqib is an orthodox batsman, very talented, however low in confidence. This is a good chance for him to shine. 24 for 5 at any stage in any format is not the score any team would want. ADCL Reds definitely on top as of now. One pair at least from ADCL Greens have to take responsibility. Very well bowled and equally well played. Realistic target at least for now for both these batsmen should be to cross 150 at least. And this is where they should play target to target, meaning 24 for 5, so they should first target 50 runs milestone. Milestone to milestone approach should be there. Very well played again. Najam taking his time. Definitely the captain also encouraging him to consolidate. The momentum is running with ADCL Reds as of now. Very intelligently played. This is how Najam plays and this is how he should play to his strength. End of the 7th over, only 1 run given. It's 25 for 5. Nishan Daud on 11 runs from 12 deliveries. Najam Saqib 1 run from 4 deliveries. Kamran Rashid finishing his first over, conceding 1 run and taking 1 wicket. 7 overs gone. Now the circle overs are finished. 25 for 5. The strategy for the batsmen should be that they should now target smaller milestones. They should first target 50 runs, then 75, then 100. And then they should look at what's the ideal total which they should at least achieve. They should at least give something to the bowlers to defend. Anything less than 120 is definitely way below par. Numan Hamid to continue. आवर भाई पानी शानी दे दें भजन 100 ही क्रॉस होना चाहिए इंशाल्लाह फोकस नहीं लूज करना हमारी प्रॉब्लम है हम कई दफ़ा समझते हैं कि हम नहीं सब प्लान से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कर रहे हैं नहीं माशाल्लाह कब आया था किधर गया ओए हारून वो मांगो Very well played again. Najam Saqib taking his time. आपकी फिर आवाज आ रही है आप कप्तान है कोई आज Reds should not lose their focus. They're in a fantastic position as of now. They've done the hard work. Caller for a single, however, Dishan sending Najam back. 3 dot deliveries. Still plenty of overs left. Played and a miss. A loose shot by Najam. Should be careful. नहीं डाले बहुत पड़ी हुई है ऑलरेडी ये मुझे लग रहा है 110% ये सनी लेके आया ना सनी
5 dot balls. Najam Saqib taking his time now. -75 करना. Played and a miss, and a maiden over finished. So it's 25 for 5 in 8 overs. 8 over. 25 for 5 in 8 overs. 25. क्या हर ओवर के बाद पानी चाहिए? अप्रोच 150 टारगेट इंशा बोल के ठीक है लेकिन 150 लेके काम बहुत की बॉल कराई है सप बने अच्छा मैं दी जगह होंदा ना मैं कर 5 ਦੇ 5 8 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਡਡ ਹਾਂ ਸਾਰੇ एनर्जेटिक है फुल ਕੋਈ एनर्जेटिक फुल है यार जिन्नी हवा चल रही है बहुत सही हो रही है ਤੁਸੀਂ अगर वैसे तो मेरा ख्याल है ਤੁਸੀਂ 100 नहीं क्रॉस करोगे अगर तो ਤੁਸੀਂ 100 नहीं क्रॉस किया तो ਤੁਸੀਂ सवाल ही नहीं पैदा होने ਤੁਸੀਂ मैच ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਵਸੇ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ चंगा हो जाएगा फिर रहना चाहिए ना नहीं वो इमोशनली बनवाना सुनाता है बहन चो अपने लड़के ऐसे देते हैं गांड देते हैं तो लास्ट मोमेंट में आके भाई मजाक कर लो यार That's the end of the 8th over. Kamran Butt to continue. It's 25 for 5. Commanding position by ADCL Reds. Current run rate is 3.12. 25 है जी. ADCL Reds definitely would want to press home the advantage and restrict ideally ADCL Greens. I mean, they definitely would smell blood and they would love to restrict ADCL Greens under 100. On the other hand, ADCL Greens practically should target 150 at least to give any chance of defense to their bowlers. Kamran Butt to Dishan Daud. Easy single taken. दलेरियां ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਬਾਬਰ ਜਾ ਯਾਰ छक्का ना मारता आउट नहीं होना जगाओ बंदे जगाओ अपने I'm a bit boggled about the fact that the field is not that attacking. Now Faisal bin Qayyum comes forward. well played A single taken again. पकड़न ही नहीं होंदे पे हाथ पैर फुल गए ने बॉल गर्म है यार आज तो आप ये बात कर ही नहीं सकते थोड़ी तो कर सकते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं ये बातों में बॉल गर्म है ना भाई बॉल गर्म है हम तो खुद भी ओहो हावर भाई को बिल्डिंग में ले लिया शाबाश ओपी तो आगे रहे Dot delivery again. I believe Humayun might come in attack now. With off spinner, there should be a leg spinner combination, ideally speaking. And that's gone. ओए ये आउट होने के लिए आगे आए थे That's a wide delivery, and that's gone. कुलदीप को भेजा कुलदीप को यार कितनी देर से बैठ किए हुए कुलदीप ने Muhammad Haroon walks in. खत्म हो गया तू बच गया ओहो It's 28 for 6. देखना टेस्ट खेलेंगे ये अभी Zishan, who was playing very well, ज्यादा बॉलें डॉट करेगा unfortunately tempted to ये come forward and lose balance.
तक खड़े हुए आज सर 9 ओवर खेले हैं इम्तियाज भाई आपके ओवर से पहले कामी के ओवर खत्म हो जाएंगे आप गए नहीं गलती कर लिया खत्म हो गया ओवर अल्लाह 2 कराए तो 3 कराए 4 करवाए क्या हो गया आपको किसने आप? हाँ बस इम्तियाज भाई रह गए चले जाते हैं stumped on a wide delivery. जाते हैं आप Mohammad Haroon now facing शाबाश शाबाश टेस्ट खेलेगा अरुण कोई बल्ला नहीं उठाना ADCL Reds in supreme commanding position as of now. ओए Played and a miss. कवर जाए भाई आमिर आ गया आ जाओ भाई आमिर को कौन है आमिर स्पिनर हाँ जी, Rana Amir comes in. रहीम भाई आपको पता ही नहीं अपने बंदे फर्स्ट टाइम देखा इसको मैंने Left arm. नहीं देखा नहीं, और बड़ा ही नोमी का इक्वलेंट हार्ड हिटिंग बैट्समैन है अच्छा जी. इसी का तो कह रहे थे कि भाई आ तू बैट्समैन खपा है ना हाँ कब बैट्समैन खपा है और हार्ड हिटिंग है बैट्समैन लेफ्टी हो और मारने वाला हो तो बल्कि ज़्यादा हाँ पाकिस्तान चले गए थे. Rana Amir making his debut for ADCL in clashes coming from round the wicket. यही फील्ड है शाबा वीडियो में सामने आ रहा हूं Najam Saqib facing. Partnership definitely required. That's a wide delivery. शाबाश ऐसी बॉल करो शाबाश समझ रही A hint of inside edge. पहुंच तो नहीं है ना ये पहले वाला नहीं था हाँ ये ड्राइव वाला नहीं है जो आप दो खड़े हुए हो अस्सलामुअलैकुम उस्मान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। इसका जो स्टिकर लगा हुआ है ना ट्रॉफी पे, इसका बैकग्राउंड अगर ख़त्म किया जाए तो इसका उठाव हो सकता है, क्योंकि इस पे स्टिकर ही होना है, क्योंकि गुलाई में है ना नीचे वाला। तो उसके लिए मैंने ये पूछना था कि ये ज़रा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बाकी आप देख लें, बता दें मुझे। उस्मान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। इसका जो स्टिकर लगा हुआ है ना ट्रॉफी पे, इसका बैकग्राउंड अगर ख़त्म किया जाए तो इसका उठाव हो सकता है, क्योंकि इस पे
में पीछे आओ, ये ड्राइव वाला नहीं है, पीछे आओ उसकी बारी में। दे दो शाबाश 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 कमी शाबाश। आराम से इजी। Kamran Butt bowling quite well. क्या बात है ओपी, क्या बात है। And a single taken after missing 2 deliveries. ये थोड़ा ना बिल्कुल ही, ये तो ऊपर है। It's 37 for 6 so far in 10.4 overs. The current run rate is 3.47. Slightly uppish. क्या बात है फैजल भाई, क्या बात है। ये बॉल को डरा के रोक रहे हैं। शाबाश शाबाश लड़के शाबाश।
Hello, and we are back. The last wicket, Najam Saqib. Undo. 1 wide 0-0 catch. 1 wide 0-0 catch. Kamran Butt now bowling to Mohammad Haroon, and that's the end of the over. ये वाइड बॉल था। Catch है. Umpire has to tell me. रन है? नहीं है? Okay, नहीं है. वो इशारा कर रहा हैं? मैं तो कहता हूँ That's the end of the 13th over. Only 1 run coming off it. It's 41 for 7 in 13 overs. Mohammad Haroon 6 runs from 12 deliveries. Rana Amir, it's 41 for 7. Coming round the wicket. Kuldeep now facing. Plenty of overs still left. That's a shot driven towards the mid-wicket region. There's protection there, a single taken. Easy catch, yes.
और दर्द हो रही है अरुण भाई के पीछे दर्द हो रही है रेड बुल खरीदने आए अंदर से यार ठीक है. A good shot played by Haroon. Excellent shot and a 4. Extra cover class by Haroon. गुड बैटिंग It's 50 for 7. अजीम भाई बैठ जाओ थोड़ा रेस्ट करो यार नहीं वैसे क्या A good over चलो मैच तो for Greens, a rarity so far. वो अच्छा बंदा है सीरियस हो गया अपने स्कोर पे इतना सीरियस अच्छाओं में आ रहा है वो पागल हो गया मैं तेरी एक्शन नोट कर रहा हूं गुड गेम हुए And that that was a magnificent hit by Mohammad Haroon towards cow corner. 15 runs off this over. Very rare in this inning so far, and very lucky to get away with this, Haroon. जी शामली को उस्मान भाई बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने नोट कर लिया. अभी वो चेंज करते हैं ना, उसके ऊपर वो वाइट बैकग्राउंड नहीं आएगा जो अपना लोगो है. दूसरा जो मेडल्स का आपने कहा था ना, उसके ऊपर टूर्नामेंट और जो ADCL का टूर्नामेंट हो रहा है ना 0.8 8.0 जो भी है आपने जो नाम दिया वो प्रिंटिंग है, क्योंकि जो लोगो है ना अपना वो उसके ऊपर नहीं आ सकता था, लेकिन टूर्नामेंट का जो हमारा नाम है वो Osama Pervez now comes into the attack. It's 56 for 7 in 14 overs. Mohammad Haroon is on 20 from 17 deliveries, and Kuldeep is on 2 runs from 4 deliveries. Osama Pervez, fondly known as OP, comes from the parking. दायरे का चिक्का भी नहीं मार सकता. Starts off with the dot ball. ओए Slightly loose delivery, driven towards the deep square leg. There is protection there. Kamran Butt runs in, and 2 runs taken. शाबाश ओपी. So the run rate now goes up to 4.05, and the projected score. Driven towards point, our protection there, a dot ball. पता करना है स्कोर कितना है चिक्का मार के दिखा. Single taken. Last ball
of the over, Mohammad Haroon, who's been hitting quite well, 20 from 17 deliveries. वो देख पीछे आ रहा है, वो देख खुद पीछे आ रहा इधर तो आ ही नहीं सकती, ओपी को शॉट लगता ही नहीं। Played intelligently towards the extra coverage and a single taken. And that's the end of the first over from OP. After 15 overs, it is 60 for 7. Mohammad Haroon on 21 from 18 deliveries. Kuldeep 5 runs from 9 deliveries. Sama Parvez, who just finished off his first over, conceded 4 runs without any wicket. Humayun Zahid comes into the attack. Leg spinner. Humayun Zahid comes in. Experienced bowler. ADCL Reds would definitely want to wrap it up. There is definitely a partnership brewing as of now. Partnership is of 20 runs from 18 deliveries, so a good partnership finally for ADCL Greens. ADCL Greens projected score is 100. They would definitely like to reach something beyond 120 and ideally by 1 to 150. Imtiaz Afridi is yet to come. Perhaps the only recognition. Humayun to Haroon. Played in a miss. Immediately getting spin. Right on the money. Slightly loose delivery. That was a loose delivery, which definitely deserved the result of a 6. It smacked towards the mid-wicket region and a big 6 to Humayun. This shows you that this pitch will offer batsman assistance as well if there is a loose delivery. Mohammad Haroon playing aggressively but quite well, 27 of 20 deliveries. And that umpire saying not out. A dangerous attempt by Haroon. He should try to bat it all out. He is an aggressive batsman. If he bats it out, at least he can give some sort. Now this is ridiculous. Attempted to play a heave-ho shot in the previous ball and then attempting again the same shot on the same ball. I'm sorry, but that is bad cricket. A senior batsman should play with responsibility. Imtiaz Afridi now walks in.
Perhaps the क्या गलत आउट दिया? जी, it's 66 for 8 in 15.4 over. Imtiaz Afridi now facing Humayun. Slightly uppish, I think. Slightly uppish. अभी देते समझ भाई, अभी देते, आ जाओ। समझ भाई, आपको साइड से कैसे नजर आ रहा है? नहीं, एक और This is the last over from the parking end. That's the end of the 16th over. साइड चेंज 16 हो गए ने 16 चेंज है आ जाओ इवेदा से पक्का आने से आ जाओ इधर आ जाओ मेरे जहादियो आ जाओ इधर आ जाओ मतलब बड़ी मुश्किल से बना देखिए बाहर आ गया ना बाहर आ गया ना चलो हो गया 1 महीने और हो गया सर 16 साइड चेंज The last 9 overs, starting from the golf course end. Usama Pervez to continue. 66 for 8 in 16 overs. Kuldeep now facing. Single taken by Kuldeep. Imtiaz Afridi now facing. Now this will be definitely an interesting contest. Faster one. Shakil right on the money. Safe pair of hands. And a single taken. ये कुलदीप चिक्का नहीं मार सकता तुझे। आराम से सिंगल डबल लेके देता रहा। पूरा ओवर खेल 20 तक। Loopy ball. Dot ball. The current run rate is 4.12, projected score 103. Loose delivery and 6 4 है 6 है and a 6. अबे सामने मार के दिखा ना। That was definitely a loose delivery. Plenty of time. शाबाश कुलदीप, थामा
Same delivery bowled, and unfortunately Kuldeep making a mess of it and walking back to the pavilion. It's 74 for 9 and 16.5 overs. Farooq Khan walks in. Last wicket. Sorry state of affairs for ADCL Greens. हम खाएंगे चलो नहीं पैड कर ला कीपिंग आ गई तेरी Hello. Cricket is definitely an unpredictable game. However, the score itself is very low. I mean, it will be definitely a very difficult, nearly improbable and impossible for ADCL Greens to defend. ओए ओए फारूक खान ये क्या 74 for 9. And that's the end of the 17th over. Humayun Zahid walks in. बहुत आला ओपी कोड़ा और ओपी तूने सही बदला लिया इसे Now this will be an interesting contest between Imtiaz Afridi. Still 8 overs left. इम्तियाज भाई बोल्ड नहीं होना Imtiaz is not used to playing subtle innings. Humayun to Imtiaz. That's a dot ball. And a chance of a catch. And that sums up the innings of ADCL Greens.